Hello, good evening, everyone. How are you all? I hope everyone is doing great. So, let me introduce myself once again. My name is Pallavi, and we are learning chemistry here. So, today's topic is metals and non metals. So, we have covered a lot about metals and non metals in our previous session, like physical and chemical properties of metals and non metal. Then, we have learned the reaction of metal and non metal with different chemicals. Okay, after that, we have learned the extraction of the metal. In this session, we are going to learn about the corrosion and we are going to learn about the rusting on iron. We are going to learn about the prevention of rusting and we will learn about the basically the factor which affect the corrosion. Okay, and after that, we will learn the alloy. Okay, so this is what we are going to learn today. So that is part 5 of this chapter. And this chapter belongs to class 10, as we all know. So let us start our today's topic. Okay. So we are starting from corrosion. So we have a question. What is corrosion? Corrosion क्या है? तो हम सबने देखा होगा आयरन के कुछ यूटेंसिल्स या आयरन के कुछ इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स वगैरह हमने देखे होंगे जो काफी लंबे टाइम तक एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में जब रहता है उसके ऊपर हम ब्राउन लेयर फॉर्म देखते हैं या कॉपर पे हम ग्रीनिश लेयर सिल्वर पे ब्लैक लेयर so what is all those things so those things are corrosion okay so let us learn what is corrosion here so we have taken the example of iron copper silver so now we are going to learn about that corrosion so that is the eating up of metal with the effect of water like moisture chemical and with the help of oxygen and all okay क्या होता है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद आयरन के ऊपर या फिर डिफरेंट मेटल के ऊपर एक रिएक्शन होता है उनके से रिएक्ट करके एक लेयर फॉर्म हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर के वो क्या होता है कोरोजन होता है ओके सो लेट मी राइट डाउन हियर the eating up wait I need to change the color of pen first let me erase that yes so basically the of metal by the action of EO or we can say oxygen present in your action CTIUN okay of EO moisture that is water vapor or केमिकल विच केमिकल वी हैव अ क्वेश्चन कौन से केमिकल तो जनरली हमने क्या देखा है एसिड क्या करता है मेटल से रिएक्ट कर लेता है ठीक है सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ठीक है वो क्या करता है मेटल को मीन्स की डिसॉल्व कर लेता है खुद में ठीक है डिस्ट्रॉय कर देता है ओके सो मॉइस्चर और अ केमिकल लाइक केमिकल that is acid okay on their and on their surface that is known as corrosion okay that is corrosion so basically due to action of air moisture and certain chemical a layer formed on the surface of metal that is corrosion okay so we and main thing is that corrosion is undesirable process हम नहीं चाहते हैं कि मेटल्स खराब हो हम नहीं चाहते कि हमारा आयरन इक्विपमेंट्स हो या यूटेंसिल्स या कोई भी चीज हो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हो या कॉपर के वो खराब हो बट ये हो जाता है दैट मींस वी डोंट हैव एनी डिजायर बट it happened so that's why the corrosion is undesirable process so here I'm writing corrosion is undesirable process sorry
undesirable process. Okay. And the corrosion of iron is known as rusting. So here, rusting of iron. What is rusting of iron? So corrosion of iron is known as rusting. And now the rusting of iron, that is when an iron comes in contact with air and moisture, we can see a red brown layer on the surface of that iron is known as the rusting of iron. Okay. So when an iron in contact with air and moisture, a brown layer or we can say red brown color, flaky or flaky when we rub something on that surface, we can see that rub out. Okay. Substance formed on the surface of that iron object or iron metal. That is the rusting of iron. Okay. That is the rusting of iron. ठीक है. ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म होता है जब आयरन कांटेक्ट में आता है एयर और मॉइस्चर के. एक रेड ब्राउन कलर का फ्लैकी ऑब्जेक्ट सब्सटेंस फॉर्म होता है आयरन के सरफेस में, जिसे हम अगर फ्लैकी सब्सटेंस को रब करेंगे तो वो रिमूव होता है. ओके. सो उसे हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं. ओके. तो लेट अस मूव 3. एंड व्हाट इज दैट फ्लकी सब्सटेंस? वो है क्या? जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आयरन आता है तो वो आयरन 3 ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है. हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड. हाइड्रेटेड दैट मींस मॉइस्चर आल्सो एडेड टू दैट. Okay. So we can write here the rust is mainly, what is rust? So rust is mainly, let me write down here, rust is mainly hydrated iron 3 oxide. Okay. Sorry, it's iron 3 oxide. And formula for that is Fe2O3 dot X H2O. That means that water of crystallization, that means water molecule, depends on the nature of the rusting. Okay. So let's move forward and we are going to learn some more about that, and that is what? The condition. Okay. The condition necessary for the rusting on iron. कैसे क्या क्या conditions होना चाहिए? So presence of air. Air that means oxygen. आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर रस्ट फॉर्म होता है. और दूसरा चीज क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ वाटर. वाटर दैट मींस वाटर वेपर, मॉइस्चर होना चाहिए. ये दो चीजें नेसेसरी है रस्टिंग के लिए. ओके. तो क्या होता है जब एयर होता है, मॉइस्चरस एयर, जब आयरन को हम उसमें काफी लंबे टाइम के लिए छोड़ दें तो वो फॉर्म होगा, क्योंकि उस मॉइस्चरस एयर में मॉइस्चर भी है, एयर भी है. ओके. लेकिन नॉर्मल जो ऑर्डिनरी वाटर होता है, ऑर्डिनरी वाटर, इन दैट सिचुएशन आल्सो रस्टिंग form, rusting occur on the iron. Why? Because ordinary water having certain amount of air. ऑर्डिनरी वाटर में सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर डिजोल्व होता है, दैट मींस ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, जिसकी वजह से जो ऑर्डिनरी वाटर होता है वो भी सफिशिएंट है किसके लिए? रस्टिंग के लिए. ओके. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी अमेजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज व्हाट? प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग को हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि रस्टिंग अनडिजायरेबल प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीजें अफेक्टेड होती है. दैट मींस आयरन वीक हो जाता है रस्टिंग की वजह से. ठीक है. या फिर कॉपर के ऊपर ही उसकी शाइनिंगनेस चली जाती है, डल सा कलर अपीयर हो जाता है, सिल्वर भी ब्लैक कलर में हो जाता है. तो इसलिए उसको रोकना बहुत जरूरी है. So how we can prevent roasting? So we are going to learn the way by which we can prevent the roasting. Okay.
So let us start. So we are going to discuss the first point by which we can prevent the rusting. Okay, so what is that? Rusting of iron can be prevented by painting. Painting. So a layer of paint should be applied on the surface of iron. आयरन के सरफेस पे एक थीन लेयर पेंट का अप्लाई कर देने से क्या होगा, वो पेंट जो होगा वाटर एंड मॉइस्चर का कांटेक्ट कट कर देगा आयरन से. ठीक है, मॉइस्चर और एयर आयरन के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा. ओके, so by applying paint will cut the contact of moisture and air, that is oxygen. The surface of iron. Okay, so this is the first way by which we can prevent the corrosion. Okay, rusting. Now we are moving forward and we are going to see the second thing by which we can prevent the rusting. Okay, so what is that? Rusting can be prevented by applying grease or oil. So we can apply grease and oil on the machinery. What happened in that situation? Also, grease and oil prevent the contact of air, that is oxygen and moisture with that iron. तो हमने क्या देखा होगा, जो फैक्ट्रीज होती है या फिर कोई मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, उसमें ब्रीजिंग की जाती है, ऑयलिंग की जाती है. क्यों? क्योंकि वो रस्टिंग ना हो पाए, वो वाटर दैट मींस मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट को कट कर पाए आयरन से, जिसकी वजह से रस्टिंग ना हो पाए, जिसकी वजह से जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट है, स्मूथली मूव कर पाए. दैट्स व्हाई वी अप्लाई ग्रीस एंड पेंट ऑन दैट. ओके, so we are moving towards the third point. And what is third point? So yes, here the third point is rusting of iron can be prevented by galvanization. Very important thing, but we have a question. Galvanization क्या है? Okay, so that is the process depositing a thin layer of zinc. ओके, जिंक मेटल का थीन लेयर अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है, किसके ऊपर? आयरन के ऊपर. जिंक क्या करता है? कोरोजन से आयरन को प्रिवेंट करता है. दैट मींस द जिंक इज एंटी कोरोजन, दैट मींस जिंक मेटल इज एंटी कोरोजन, दैट मींस उसको वो कोरोड नहीं होता. तो वो क्या करता है, जब हम जिंक का लेयर अप्लाई करेंगे आयरन के ऊपर, तो क्या करेगा, वो एयर एंड वाटर का, दैट मींस मॉइस्चर का कांटेक्ट को कट करेगा iron surface से. So that's why we can prevent the iron with the help of galvanization. Okay, so let me write here the process of depositing a thin layer of zinc metal that is what? Galvanization. तो व्हाट हैपन, मोल्टेन जिंक होता है, जिसमें क्या किया जाता है, आयरन ऑब्जेक्ट को डिप किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जिंक का लेयर जब कूल होगा तो वो जिंक का लेयर जो होगा वो अप्लाई हो जाएगा सरफेस पे आयरन के. सो दैट्स व्हाई द आयरन गुड प्रिवेंटेड फ्रॉम द कोरोजन बाय अप्लाइंग zinc metal on the surface of the iron, because zinc do not corrode. Okay, so let's move forward. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, जिंक क्रोजन क्यों नहीं होता है जिंक का? क्योंकि जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है. ओके, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो जिंक ऑक्साइड की लेयर को फॉर्म होने के बाद से क्या होता है, फर्दर रिएक्शन, दैट मींस फर्दर कोरोजन नहीं होता, वो जिंक ऑक्साइड का लेयर कोरोजन को प्रिवेंट करता है. ओके,
So let's move forward and we are going to discuss the fourth point, that is rusting of iron can be prevented by the tin plating and chromium plating, okay, on the surface of iron. So basically tin and chromium are the resistance of the corrosion. टीन एंड क्रोमियम क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है कोरोजन का। तो जब हम टीन और क्रोमियम का लेयर अप्लाई करते हैं आयरन के ऊपर, तो उस टाइम पे क्या होता है, कोरोजन, आयरन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से, ओके। सो जिंक, सॉरी हियर टीन एंड क्रोमियम metal deposited iron and steel also, okay, by electroplating. Okay, so this is the fourth thing. Now we are going to discuss the fifth point by which we can prevent the corrosion on the iron. That means rusting of iron. Okay, so rusting of iron can be prevented by alloying it to make stainless steel. Okay, कैसे एल्वाइन क्या होता है, दैट मीन्स क्या करते हैं हम आयरन को कुछ और मेटल से नॉन मेटल्स के साथ मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके एल्वाई बनाते हैं। एल्वाई क्या होता है, उसके कंपैरिजन में आयरन के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है और कोरोजन फ्री भी होता है। ओके, सो दिस इज द वे बाय व्हिच वी कैन प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम द rusting. Okay, so that is the last point by which we can prevent the corrosion, that means rusting of iron. Okay, so let's move forward and now we are going to discuss the corrosion of aluminium. So when aluminium come in contact with oxygen, it form aluminium oxide. Okay, aluminium oxide when formed, we can see aluminium utensils. After some time we can see the shiny color of aluminium utensils got done. कुछ टाइम के बाद क्या देखते हैं, एक शाइनीनेस होता है एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में, बट कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे वो थोड़ा सा डल हो गया, कलर डल हो गया। क्यों डल होता है, क्योंकि वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। बट यस, दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बेनिफिशियल फॉर एल्यूमिनियम, व्हाई, बिकॉज इट प्रिवेंट द फर्दर कोरोजन। ठीक है, वो फर्दर कोरोजन को प्रिवेंट करता है। So aluminum oxide is the protective layer on the aluminium utensils. So here I am writing O shining aluminum utensil is exposed to moist air. So air, oxygen present in air react with aluminium and form aluminium oxide. That is a layer of aluminium oxide. Okay, so that aluminium oxide prevent the further corrosion of aluminium. Okay, so that is a protective layer on the surface of aluminium. Now what is anodizing? So what happened, the aluminium oxide, जो aluminium oxide होता है, क्या करता है, aluminium metal का इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड बनाया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जब इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो ऑक्सीजन फॉर्म होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। वो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के पास कलेक्ट होके और वो क्या करता है, एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ओके, so here we can write what is anodizing. So the layer of
Aluminium oxide on the surface of aluminium object made thicker by electrolysis. इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस क्या किया जाता है? इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। और एनोड किसका बना होता है? एल्यूमिनियम मेटल का। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, वो ऑक्सीजन एनोड पे कलेक्ट होता है और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया जाता है। दैट मीन्स कि द लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड गेट थिक, okay, after that electrolysis. So that process is known as anodizing. That process is known as what? Anodizing. Okay, so let's move forward and we are going to learn the corrosion of what? So here we are going to learn the corrosion of copper. So what happened? Copper do not react. We all know the copper is less reactive metal. So copper oxygen से react नहीं करता, but किससे react करता है? Carbon dioxide and water present in the air. So when copper react with carbon dioxide and water present in the air, it forms copper carbonate. Okay, a layer of greenish layer of copper carbonate on the surface of the copper object. Okay, so what happened? Copper react with carbon dioxide and water present in air and form greenish layer on the surface of copper. Okay, copper object we can write down here, or copper material. Okay, so that blue greenish, that means greenish layer is the copper carbonate, CuCO3 dot CuOH whole to copper hydroxide. So that is the layer, greenish blue green layer, which formed on the surface of copper. So that is also known as tarnishing of copper. Okay, जैसे आयरन के टर्म में रस्टिंग होता है, कॉपर और सिल्वर के टर्म में टार्निशिंग होता है. Okay, so let's move toward the next metal, and that is the corrosion of silver. So silver, as we know, silver is also unreactive metal. तो इसलिए सिल्वर ना कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, ना मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, ना oxygen से react करेगा, but there are certain amount of sulfur present in air also. Okay, so what happened? Copper react with hydrogen sulfide, and what form? Sorry, silver react with hydrogen sulfide, and after reaction with hydrogen sulfide, silver form silver sulfide, that is AgS, Ag2S. Okay, silver sulfide का layer form करता है. So what happened? Silver react with H2O, that is hydrogen sulfide present in EO. Okay, form silver sulfide. That is Ag2S. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. सो हियर आई एम राइटिंग copper and silver. So what happened? Let me change the color of pen and then I will write again. So that is tarnishing Okay, so tarnishing of copper and
silver. Okay, let's move forward and we are going to learn about alloy. So alloys, what is alloys? So that is the homogeneous mixture of two or more metal or one metal or non-metal. So that is basically homogeneous mixture of metal का हो या फिर metal non-metal का हो. Okay, so that is alloys. So basically of two or more metal or non-metal. बट मेटल्स इज नेसेसरी फॉर दैट. ठीक है, एलवाई के लिए मेटल नेसेसरी है. मेटल नॉन मेटल हो सकता है, मेटल मेटल हो सकता है. तो एलवाई इन सारी चीजों का होता है. ये होमोजीनियस मिक्सचर है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी आर यस yes, so we are going to learn about the example एलवाइज की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. लाइक कि ड्यूराल्यूमिन, ये किसका एलवाई है? ये एलवाई है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज का एलवाई है. एल्यूमिनियम क्या होता है? सॉफ्ट होता है, वीक होता है. बट जब इसे हम कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज के साथ मिक्स कर देते, सो दैट इज स्ट्रॉन्गर इन कंपेरिजन टू द प्योर एल्यूमिनियम. So that alloy is known as duralumin. Okay, the next alloy is magnesium. Okay, so magnesium is the alloy of aluminium and magnesium. Okay, इसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है. ये भी क्या होता है? प्योर एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है ज्यादा. ओके, so let's move forward and we are going to see the next alloy. Example of the next alloy, and what is that? So that is here, and here is the brass, that is the mixture of copper and zinc. Okay, so alloy of copper and zinc is also mixed here, so that's the alloy of copper and zinc. Then steel is the alloy of iron and carbon, so that is weaker in comparison to stainless steel. तो डबल स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में वीकर होता है. ठीक है, बट व्हाट इज स्टेनलेस स्टील? सो स्टेनलेस स्टील इज the mixture, that means alloy of the iron, chromium and nickel. So iron, chromium and nickel are mixed together to form the stainless steel. So that is the alloy of iron also. Now bronze is the alloy of copper and tin. Okay, so here we are going to see the brass having the percentage of copper is 20% and percentage of zinc is only, sorry, copper is 80% and zinc is 20% only. Okay, in case of steel, here the only 0.1 or 0.1.5% of the carbon are mixed with the iron. Okay, but in case of bronze, in case of the percentage of copper is 90 and the percentage of tin is 10 only in case of bronze. Okay, soldier is the alloy of lead where the tin is mixed along lead. Okay, so the percentage of the lead is 50, as tin is also 50%. Both are mixed. Now amalgam is the alloy of mercury with some other one or more metals. Okay, so that is amalgam. Then alloy of gold. So pure gold are very soft in nature, बहुत ज़्यादा soft होता है, आराम से press हो जाएगा, because we have learned the gold is most malleable metal. Okay, तो क्या होता है? गोल्ड को जब जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है. ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है. तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए उसमें क्या किया जाता है? 22% गोल्ड का और 2% या तो सिल्वर, इधर सिल्वर और copper should be added with that gold to form the alloys of gold. So that is about the alloys of the metals. Now we are moving forward and we are going to learn the properties of the alloys. क्या क्या properties होती है?
So that alloys are more stronger pure metal. The next, that is first properties. Second properties, alloys are more harder, or we can say more hard in comparison to pure metal. Okay, the third point is alloys are more resistant to corrosion. To corrosion. Okay, that means corrosion free. And fourth, alloy have lower melting point in comparison to pure metal. And alloys have, fifth point is alloys have lower or we can say less electrical conductivity in comparison to pure metal. Okay, so this is about the properties of alloy. So what we have learned in today's session, we have learned about the corrosion, we have learned about the rusting on iron, then we have learned about the tarnishing of copper and silver, then we have learned about the alloys, then we have learned about some example of some alloys, and also learned about the properties of alloys. So this is all for today, and this is the last section of metals and non-metals. So I hope this chapter is clear to all of you. So bye everyone. Take care. Good night. Keep learning. Keep smiling. Okay. Bye. Take care.